Good morning, everyone. Audible? Hello. Good morning. Anyone, please respond if I am audible or not. Sorry for the delay. There was some technical issues. We are not able to go live. So there is a 15 delay starting the class. So say all okay. We'll start the class. From my end, it seems everything is fine. Well, read like that. Okay. So welcome everyone. Sorry for the delay. Today is the second day of the Prastuti revision through MCQ series. Okay, and आज ये हमें discuss करिया about 25 CSAT questions. Okay, so that every Saturday at 10 a.m. we will have the CSAT sessions. Okay, and as you can see in the schedule here, 6 days of the week we have different classes. Monday economics, Tuesday geography, Wednesday polity, Thursday environment and science and technology, then have history, and finally that. Okay, now with this the details of this class has already been discussed. So if you want the PDFs and all, join the CACS telegram channel, or you can join my telegram channel for my PDFs. Okay, now let's proceed without any further delay. Okay, so before we go into the discussion of questions, गोटे जिनस डिसाइड कली कि आमे टिके PYQ एनालिसिस कर दवा. ओके, ट्रेंड कौन कौन रहउची, राइट, खास करके लास्ट 4 वर्ष रो, कारण से लास्ट 4 वर्ष हबो ही प्रीलिम्स क्वेश्चन पैटर्न टा टिके चेंज हिची, राइट. तो से हिसाब रे लास्ट 4 वर्ष रो आमे जदी डिस्कस कर दवा, इट विल बी हेल्पफुल फॉर अस, राइट. नाउ तो हमरो CSAT रे, as you all might know, टोटल 3टा सेक्शन थाए. ओके, गोटे होची क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, लॉजिकल रीजनिंग, आउटे रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन. ओके, एंड तारो मोर और लेस इक्वल वेटेज थाए. ओके, टोटल रे हमर केतेटा क्वेश्चन आसे, टोटल रे 80 क्वेश्चंस, राइट. एवरी ईयर वी गेट 80 क्वेश्चंस इन CSAT. ते 80 टा क्वेश्चन रु मोर और लेस इक्वल वेटेज थाए. तो 25 25 25 तीनटा करे 75 हे गेला. देन बाकी 5टा क्वेश्चन एमती सेमती रैंडमली डिवाइड हे जाय. as you can see, quantitative aptitude ro 30, reasoning 25 and reading comprehension 25. next 2022 रे 28 27 25, next year 26 29 25, तापरे 27 30 23. तो comprehension रो more or less 25 or less रहउची, less than equal to 25. बाकी दीटा को हमर quantitative aptitude रो around 30 रहउची and logical reasoning रो 25 रहउची, नहले 25 रो 30 रो. So basically aptitude and reasoning they have more weightage compared to the comprehension, but ता माने नुहे जे comprehension टाउ छाड़ दे कि जीवो. comprehension रे माने ताठू अधिक लो हैंगिंग फ्रूट हमको मिलिवनी OPSC CSAT पेपर रे. ओके, जेमदी स्कूल रे पिला बेले तमे बस क्वेश्चन देखुथला एंड आंसर कर दोथला जे हां ए क्वेश्चन टा अछि, यार आंसर ए पैसेज भीतर अछि, देखि कि पढी कि मु आंसर खोजि कि लिखि देबी. एग्जैक्टली सेम वे रे ही तमको कॉम्प्रिहेंशन करिया पड़ो. ओके, तो OPSC रो कॉम्प्रिहेंशन बहुत ही इजी रहउ. देन
लॉजिकल रीजनिंग आउ एप्टीट्यूड रो कोन होची ना एटार क्वेश्चन मोस्टली इजी टू मॉडरेट रोची डिफिकल्ट क्वेश्चन रहुनी वे ओके no difficult questions are there but then again same formula same जिनस सब पड़ी की मोर पर्सनल व्यू था माने एमती डिफिकल्ट सेते किछि न थाए बस हां किछिटा क्वेश्चन थाए जोरा का ट्रिकी थाए डिफिकल्ट न थाए ओके तो से ट्रिक टा जदी तमे जानि छ यू कैन आंसर इट इजी ओके नाउ क्वेश्चन लेवल देखले केते क्वेश्चन आसुची एवरी ईयर सेटा भी देखले तो लेट्स सी ईच सेक्शन रे को टॉपिक रे इंपोर्टेंस होची हमो को टॉपिक पढिवार अछि ओके नाउ फर्स्ट इज क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड रे नंबर सिस्टम गोटे रहला परसेंटेज प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो प्रोपोर्शन एवरेज टाइम एंड वर्क मोर और लेस एक्सेप्ट द एवरेज सेक्शन बाकी सब रे देखो 2 और 3 क्वेश्चंस होची मोर और लेस एवरी ईयर दुई इन केस ऑफ नंबर सिस्टम परसेंटेज रे टिके 3 ही न हले 2 प्रॉफिट लॉस रे भी 2 गोटे वर्ष खाली गोटे क्वेश्चन असला 2023 रे तो मोर और लेस एवरी सेक्शन इज गेटिंग 2 क्वेश्चंस ओके देन नेक्स्ट कोन टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस तादरे 2 एक तो ट्रेंड इज करेंटली 1 ई सेक्शन रे हमर कोन टाइम स्पीड बेसिक इक्वेशंस हमर जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन रहला कि इनइक्वालिटीज रहला से सब जिंस एथरे कवर हो जाउची एंड एबे बहुत कम आसु ओके देन वी हैव परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन एंड प्रोबेबिलिटी ए दीटा करे बहुत जन को प्रॉब्लम हुए एज यू कैन सी प्रोबेबिलिटी रो प्रोबेबिलिटी बहुत ही कम ओके तो 1010 तो सेटा रे टेंशन नवा दरकार नै यू विल बी देखो जहाँ भी क्वेश्चन आसुची लाइक आई सेड क्वेश्चन लेवल कोन अछि सबुरा इजी टू मॉडरेट तो प्रोबेबिलिटी रो क्वेश्चन भी बहुत ही इजी रहबो आगु को हमें जतले प्रैक्टिस करिया प्रोबेबिलिटी रो क्वेश्चन सेतले तुम मन देखियो जे इट इज वेरी इजी ओके नाउ परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन भी सेटारे भी किसी जन बहुत ही वीक थांती एंड सेथरे भी one question every year आसुची and then there also question is easy to moderate जोटा कि तमे बहुत ही कम प्रिपरेशन रे भलो से आंसर कर परियो ओके देन फाइनली हमरो 2D ज्योमेट्री अछि देन वी हैव मेंसुरेशन DI data sufficiency and simplification and other miscellaneous questions तो मेंसुरेशन ता अगेन तार कोन कहबा वेटेज टी कम रहउची DI रे we have good enough number of questions तो एथरे हमकु क्लियरली 10 to 8 marks मिल जिवा हमकु एथरे ओके डाटा सफिशिएंसी रे again here also the weightage is very good 10 to 15 marks रो weightage रहउची ओके तो एटा है गेला हमर क्वांट रो कोन सेक्शन रो केते केते क्वेश्चंस आछी देन अगेन ता माने नुए जे हमें मेंसुरेशन रो किछि भी क्वेश्चन करवानी कि हमर प्रोबेबिलिटी रो किछि भी क्वेश्चन करवानी सब जतक सेक्शन मु मेंशन करली all the sections we will be discussing in the next 4 or 5 sessions ता सहित नेक्स्ट हमर जिबा हेबे कोन रीजनिंग रो सेक्शन को ओके रीजनिंग रे कोन रहउची सेम अगेन क्वेश्चन लेवल इज easy to moderate okay and याद रे कोन रहला को सेक्शंस रहउची कोडिंग डिकोडिंग सीरीज नंबर सीरीज रहला कि लेटर सीरीज रहला डायरेक्शन एंड डिस्टेंस ओके तापरे ब्लड रिलेशन तो एठरे क्वेश्चन देख दियो सबथरे एवरेज दीटा क्वेश्चन आछी राइट कोडिंग डिकोडिंग हैला कि नंबर सीरीज हैला डायरेक्शन एंड डिस्टेंस रे गोटी क्वेश्चन ओके देन नेक्स्ट होजी हमरो ब्लड रिलेशन तादरे भी ऑन एवरेज गोटे आछी लास्ट ईयर ही खाली दीटा आस्तला सिटिंग अरेंजमेंट एटा गोटे पैसेज देथिवो तादरे चारटा कि तीनटा क्वेश्चन देथिवो तो ऑन एवरेज 10 मार्क रो तमरो क्वेश्चन आस जाउची सो दिस इज समथिंग इंपोर्टेंट देन रैंकिंग एंड ऑर्डर यार गोटी ही रहउची सिलोगिज्म यार दीटा कि तीनटा क्वेश्चन आछी ओके सिटिंग अरेंज स्टेटमेंट कंक्लूजन बाय रेफरेंस एटा रे 4 और 3 क्वेश्चंस रहउची ओवर द इयर्स
ओके नेक्स्ट कौन रहा आउ कौन सेक्शन रोचे हमर रीजनिंग रे स्टेटमेंट एंड अजम्पशन और आर्गुमेंट वाला टाइप रो सेटारे भी दीटा क्वेश्चन ऑन एन एवरेज आसी देन होची डिसीजन मेकिंग और केस स्टडी जोटा तुमको पचार जे तमे ऑफिस रे छ तमरो गोटा कलीग को विटनेस कलो जे से करप्शन करची तमे कोन करियो कोन कोन नु तो कोन करियो एंड चारटा ऑप्शन दी तो से टाइप रो क्वेश्चन हमरो टिके अधिक आसे जोटा आगु 5 थिला एबे बॉडी की 7 हे गला ओके एंड तार वेटेज भी टिके माने स्कोरिंग अपॉर्चुनिटी याद अधिक आसी गला नियरली 15 टू 17.5 मार्क्स रो क्वेश्चन आसी जाउची राइट देन पजल रहउची किछटा ऑन एवरेज तीनटा रहउची देन डेटा सफिशिएंसी टाइप क्वेश्चन ऑन एवरेज दीटा लेके क्वेश्चन आसु ओके हां बेसिक एथरे हमको बस गोटे जानिबार अछि जे हमर चैप्टर कोन कोन दैट इज व्हाई आई हैव मेड दिस टेबल ओके अदरवाइज टेबल रे जहा अछि सब रहबो एंड कॉम्प्रिहेंशन रे किछटा एमती पैसेज रहउची जो थरे की तीटा क्वेश्चन गोटे क्वेश्चन तीनटा क्वेश्चन एमती रहउची किछटा पैसेज एमती रहउची जे जो पांचटा क्वेश्चन रहउची एंड 10टा क्वेश्चन वाला पैसेज बहुत ही कम आसुची एबे आगुरु थिला बहुत बट सेटा कम आसु ओके so with this we are done with the pyq analysis एबे हमें स्टार्ट करबा हमरो एक्चुअल टॉपिक ओके हमर जो एमसीक्यू डिस्कशन करे तेरे स्टार्ट करबा नाउ मु कोन डिसाइड करची हां एवरी क्लास 2 or 3 टॉपिक्स ही चूज करी ओके दीटा की तीनटा टॉपिक फ्रॉम क्वांट दीटा की तीनटा टॉपिक फ्रॉम रीजनिंग एंड पैसेज रो गोटे ओके 5 क्वेश्चन टोटल 25 क्वेश्चंस करियार अछि हमको तो क्वांट रो रहइबो 10टा क्वेश्चन रीजनिंग रो 10टा रहइबो एंड रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन रो 5टा रहइबो ओके एटा दीटा की तीनटा टॉपिक रहइबो तो भी 2-3 टॉपिक्स रहइबो ओके बाकी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन गोटिए पैसेज रहइबो 5टा क्वेश्चन रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पई कोन करची बिकॉज़ रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन बहुत ही डिफिकल्ट तुमको मिल पारे बहुत ही पारे आई प्रेफर्ड टू डू दिस कि इन केस ऑफ रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन हमें ओनली पीवाईक्यूज बहुत सारा रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन अच्छी ओपीएससी रो तो सेही थ्रू ही काहे कि हमें प्रैक्टिस न करे इट विल बी लाइक अ रियल एग्जाम फील ओके बाकी रहला रीजनिंग आउ क्वांट ए दीटा करे इट विल बी अ mix of few PYQs and practice questions okay तो practice question रो नंबर टा बेसी रहबो 10टा रु 8टा कि 7टा क्वेश्चन रहबो practice question PYQ 3-3टा रहबो ओके हां with this आज रो हमर कोन टॉपिक रखि छी मु क्वांट रे दीटा टॉपिक अछि ओके गोटे होची नंबर सिस्टम आ गोटे होची बोर्ड स्ट्रिंग रैंडमली मु रखी ओके त माने एटा हो भाबियोन जे गोटे टॉपिक रे सर स्टार्टिंग रु चलले जेमति क्लास रे पढा होची सेमति हो ना इट विल बी एट रैंडम मो चॉइस रे मते जोडा ठीक लागला मु रखी ओके हां so before we go into this discussion of our what number system question discussion kariba aguru let's talk about the basic aspect okay got a quick revision kariba of the basics number system okay okay number system रे हमहु starting कोठु करियार अछि ना नंबर विषय रे हमहु पढियार अछि राइट नंबर विषय रे कोन पढियार अछि हमरो डिफरेंट टाइप रो नंबर्स अछि राइट तो फर्स्ट जोटा तमे बहुत ही बेसिक माने लोअर लेवल रे जदी कहबो दैट इज द
natural number. Lower level in the sense सबठू smallest set जदि कहबो that is natural number. Natural number रे कौन रोचे हमारा 1 5 7 etc. जोटा कि हमारा कौन बेसिकली नेचर रे तमे गोटे मनुष्य देखिया को गोटे अधा मनुष्य देखिया को पाउन राइट तो सच काइंड ऑफ थिंग सेज बाय नेचुरल नंबर को आइछि देन नेचुरल नंबर पर हमर कोन आछि हमर आछि होल नंबर ओके होल नंबर रे कोन होछि होल नंबर 0 प्लस नेचुरल नंबर तो बेसिकली एटा कोन हला तो 1 5 एंड सो ऑन ठीक है natural number gala whole number gala then we have integers okay integers रे कौन कौन आसीबो positive integer and negative integer आउट रहबो 0 ता सहित positive integer कौन कौन 1 5 negative होची -1 -2 -5 तो बेसिकली integers हमर कौन so okay this is the set of integers right then हमर आसी जो integer सहित next set of numbers is rational numbers rational number रे हमें both integers and decimals को सोचे now rational numbers रो how do we define a rational number के कोई परियो comment रे anyone ये भी नहीं काकू भी आसुनी very good so as Pranati said any number which is represented which can be represented in the form of p by q where q is not equal to 0 and this p by q in case it is a decimal it is terminating or a recurring decimal terminating decimal माने कौन यदि हमें लेट्स से एग्जांपल नवा 5/2 एटार कौन हबो 2.5 तापर आउ किछि नहीं the answer is decimal in decimal form it is 2.5 तो 2.5 रे सरी गला ठीक तापर को आगु बढ़नी रिकरिंग डेसिमल कौन हला फॉर एग्जांपल हमें नहीं छे 2.333333 एमडी कंटिन्यू ही चल और सिंपल so this is 7/3 right
7 by 3 हेले कौन 2.33 it will continue. So आमे सेटा कौन लिखिबा 2.3 bar, right? So this is recurring decimal. Now next कौन रहिला rational number पर irrational numbers. These include numbers which are like which are not perfect squares, root 2, root 3, root 5, pi, ये सब जिनस ता सहित non terminating decimals, let's say 2.3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1, 2, 4, 5, 6, 4, 3, 2, 1, 9, 8, 7 एमती है कि बड़ी बड़ी चलती हो. Okay, so such kind of non terminating decimals also come under irrational numbers. Okay, now all these rational and irrational numbers, they form the biggest set, that is the real numbers. एथरे हमरो root 2, root 3, 5 by 2, 7 by 3, 1, 2, minus 1, minus 3, minus 4, minus root 2, all of these will come under this. Okay, ता सहित आ गोटे सेट भी थाए यार एक्सेप्ट अदर रियल नंबर बाहर जदी किछ रहि जाउचे, दोज आर कॉल्ड एज इमेजिनरी numbers, जो थरे की मल्टीप्लाई हे की रहि थाए माइनस रूट ओवर ऑफ -1. ओके, जोडा को हमें i और किछि किछि जगह रे j भी डिनोट करू. ओके, so these are all the different types of numbers, right? एगोरा कहूची नंबर सेट. ये जो हमें नेचुरल नंबर देखिले, इन केस ऑफ नेचुरल नंबर ताथरे हमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप रो नंबर भी देखिया पाउचे. ओके, गोटे होची 1 1 कोनोसी कैटेगरी रे आसीबन, so that is kept as a separate category. ता सहित हमें देखुचे गोटे कंपोजिट नंबर आउट देखुचे प्राइम नंबर. कंपोजिट नंबर कोन ना जोटार की मल्टीपल फैक्टर्स अछन, मोर देन टू फैक्टर्स जदि रहिले गोटे नंबर रो, then that is called as composite number. Composite number रो एग्जांपल कोन 4, 6, 9, 8, 100, 120, 12 lakh. Okay, so anything which has more than two factors is a composite number. Prime number रे कोन 2 factors, तार टोटल रे दीटा ही फैक्टर रहइबो, the number itself and 1. कोन 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19 and so on, right? तो पिला बेलू तो ये सब जिनस तमे पढ़ी आसुचो, गोरा बस खाली गोटे रिफ्रेशर दिया होची तमन हो, राइट? तो नंबर सिस्टम रो सब एग्जांपल आसीगला. ता सहित प्राइम सहित आ गोटे जिनस थाए को प्राइम बोली, जोटा कि बहुत जन कंफ्यूज होन. कोन ना को प्राइम माने नुह जे ए जो ओनली दीटा फैक्टर रहबो ना, को प्राइम रे कोन रहबो, इट हैज टू नंबर्स. ओके, दीटा नंबर को हमें कहबा को प्राइम सांग. ओके, केतबेले तळे सेमानंकर किछि कॉमन फैक्टर नथिबो. ओके, जेमति कि एग्जांपल कोन 2, 3, 2, 3 रो 1 छडा आ किछि कॉमन फैक्टर अछि कि नो, देन आउ कार एंड एठी कोन हला 2 and 3 both are prime numbers. Then next कोन 3 आउ 4, these two are also co-primes. से दीटा कर किछि कॉमन अछि कि नाही, एठी गोटे प्राइम नंबर गोटे कंपोजिट नंबर. देन नेक्स्ट एग्जांपल 4 and 9 both are composite numbers, both रो one ही only common factor रहबो, आउ किछि common factor नाही, so that is also co-prime. Okay, co-prime रो एग्जांपल होची जो दीटा का नंबर विषय रे हम कथा होचे सेमानंकर common factor 1, otherwise आउ किछि नथिबो. Okay,
ता सहित आउ गोटे जिनस एई प्राइम नंबर से देखिबो पूरा गोटे बहुत ही अधिक इंपोर्टेंस अछि 2 is the only given prime number. ओके दुई छड़ा आउ कौन सी इवन प्राइम नंबर रहबो काहेकि ना जदि हमें अदर प्राइम नंबर नबा अदर इवन नंबर कंसीडर करबा 4 4 रा फैक्टर आस जाउ ना नहीं 1 2 4 6 1 2 3 एंड 6 8 1 2 4 8 राइट सिमिलरली 100 तार भी आस मल्टीपल राइट 1 2 ଆମର 4 50 100 and so on, right? So these will be the multiple factors. तो अति कम रे तीनटा तो रही जिवो तार राइट तो दुई छड़ा हमर अन्य कोनोसी इवन प्राइम नंबर एग्जिस्ट करेन ओके so with this we are done with the number system section ता सहित ए नंबर सिस्टम अंडर रे हमरा आउरी बहुत सारा क्वेश्चन आसे specifically based on what the divisibility rule okay divisibility सबुतक divisibility rule रो मु एबे तम माननकु गोटे कोन करबी रिवीजन पई शॉर्ट नोट टाइप रो गोटे दे देबी सेटा को तम मान लिखि की रखि दबो दैट विल बी मोर देन एनफ फॉर योर एग्जाम ओके ता बाहर आउ किछि डिविजिबिलिटी रूल मिलिवनी तमको ठीक अछि ना पूरा स्टार्टिंग रु जिवा 2 4 5 6 एमती करके हमें आगु आगु बढ़ जावा ओके तो 2 रा डिविजिबिलिटी रूल कोन ना यूनिट डिजिट रे as 0 2 4 6 और 8 ए पांचटा का नंबर रु जोटा भी हमर यूनिट डिजिट रे थिवो दैट विल कम अंडर दैट विल बी डिविजिबल बाय 2 10 12 24 26 38 all of these are divisible by 2 right but पूरा divisibility rule विषय तो सेते बेसी किछि एक्सप्लेन करियार नै देन 3 कोन sum of all digits divisible by 3 हां कि नहीं 9 9टा 9 छाड़ दियो तो सिंगल डिजिट आउ कोन let's take 14986 एटा 3 द्वारा डिविजिबल की नहीं देखियो हमें 1 प्लस 4 5 5 प्लस 9 14 14 प्लस 8 22 22 प्लस 6 28 28 टा 3 द्वारा डिविजिबल की नहीं तो होनी तो दिस इज नॉट डिविजिबल बाय 3 ओके आ गोटे नबा 1 5 8 9 6 एटा हबो कि नहीं देखिबा 9 1 10 8 6 14 24 प्लस 5 केते हला 29 एटा भी होनी आ गोटे देखिबा 2 4 9 9 7 एटा देखिया 2 4 6 9 6 15 ताकू कोन करिया 6 कर दो तो डिविजिबल ते नॉट डिविजिबल तो 6 4 10 20 30 राइट so this will be divisible by 3 now 3 रा भी this is relatively easy तो हमरो बेसी किसी टेंशन नबार नहीं then next होची divisibility rule of 4 4 रा कोन हो 4 रा 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 4 रा
last two digits of the number are divisible by 1 2 3 4 5 6 7 8 is it divisible by 4 तुमको ये सब किसी चेक करिया नहीं 78 को चेक करियो 78 डिवाइडेड बाय 4 4 38 9 4 36 2 बड़े वाला so it is not divisible by 4 so this number is not divisible by 4 similarly 1 2 3 5 6 7 6 is it divisible by 4 76 yes it is divisible by 4 आसीबो हमरो 19 okay so एमिति तुमको चेक करियार अछि now then next होची कोन divisibility rule of 5 very basic unit digit is either 0 or 5 okay so basic 5 10 15 20 25 30 35 all these are multiples of 5 unit digit रे कोन होची 0 or 5 okay no कोन पंचनन no no कोन पई कोतलो okay then 6 रो कोन हबो ना सी 8 गोटे रूल इंट्रोड्यूस कोन ना any number be it 6 or 12 or 15 anything सेही नंबर रे कोन हबो ना जदी आमे ताकू डिवाइड कर पाछे इनटू टू को प्राइम नंबर्स कोन 6 टा ही जाउची हमरो 2 into 3 2 and 3 are को प्राइम 12 टा ही जाउची कोन 3 into 4 3 4 को प्राइम बट आमे सेटा को 2 and 6 कर परिवानी because 2 and 6 are not को प्राइम्स okay 15 3 into 5 this is also co prime right 19 9 into 11 this is also co prime right so जेतबळे आमे गोटे नंबर को एमति दीटा को प्राइम नंबर रो मल्टीप्लिकेशन रे एक्सप्रेस करि पारुथुबा देन कोन हबो इफ द क्वेश्चन इज आस्किंग लेट्स से गोटे क्वेश्चन पचारची नंबर देची x is check if x is divisible by 99 or not तो 99 रो तमे डिवाइड करियो गोटे देइछो जदी एने लेट्स से 3 8 7 6 5 4 3 1 एमति करी गोटे आउरी लंबा नंबर देइछो से केस रे कोन तमे बसिकी डिवाइड करियो टाइम रहिबन तो से केस रे तमे चेक कर दो 9 रो डिविजिबिलिटी रूल अप्लाई होची कि नहीं 11 रो अप्लाई होची तो दिटा का हमें आगु को देखिबा ठीक अछि तो हमकु चेक करियार अछि कोन ना 9 रो चेक करियो and 11 रो चेक करियो जदी दीटा करे डिविजिबल होतो then the whole number is divided by 99 okay so similarly 6 case रे कोन होबो if number is divisible by 2 and 3 तो एटा को अदर वे रे हमें कोन लिख परिबा if the number is even and is divisible by 3 2 रे जदी divisible हबो all the even numbers are divisible by 2 right so हमें कोन कर देले the number should be even 6 रे divisible हबार अछि माने the number must be even ता सहित कोन हबो divisible by 3 okay that is the divisibility rule of 6 okay 6 रो divisibility rule गला then next हमें कोन देखिबा divisibility rule of 7 okay 7 रो divisibility rule कोन अछि ना एटा होची गोटे माने बहुत ही सिंपल मेथड कोन ना
1 -2 -3 1 एटा मन रखियार अछि तुमको 7 रा डिविजिबिलिटी कोन होबो एठी ना एठी कोन करिवो तुमको गोटे नंबर देला फॉर एग्जांपल 4689 you have to check divisibility of this by 7 तो तुम कोन करिवो 4 रे मल्टीप्लाई करिवो 1 6 रे मल्टीप्लाई करिवो -2 8 रे मल्टीप्लाई करिवो -3 9 रे मल्टीप्लाई करिवो -1 बट बिकॉज एटा 4 डिजिट अछि तो 2 आउ 3 को हमें इग्नोर करतो तो एठी कोन हो 4 -12 -24 -9 ओके तो केते हला हमरो 9 21 40 तो -41 आछी 41 इज इट डिविजिबल बाय 7 नो राइट तो एठी जदी 4 जगह में जदी 5 कर दवा एटा 5 ही जो 5 सॉरी 3 कर दवा 3 कर दवा एटा को देन कोन ही जो number will come to be -42 right -42 is which is divisible by 7 so -6 sir hobo yes this number is divisible by 7 okay now ei jagare ame jodi gote 6 digit number dela let's take 48976 okay तो एठी ame kon kariba 1 -2 -3 -1 2 3 तो एमती मल्टीप्लाई कर दो ओके एटा आइ जो केते 4 -16 -27 -7 +12 +6 ओके तो चेक 10 22 22 गले 5 7 5 12 12 18 28 हो -28 ओके तो -28 हेले it is divisible by 7 so this entire number is divisible by 7 okay तो सेमिति ही चेक करिवो divisibility of any number by 7 okay in case तुमको एग्जाम रे ओपीएससी रे आसीबनी in case the number has more than 6 digits you repeat the এই সিরিজটা को रिपीट कर दो जदि लेट्स से 8 9 7 6 5 4 3 1 9 8 एमती गोटे नंबर अच्छी तो तुम कौन कर 1 -2 -3 -1 2 3 1 -2 -3 -1 एमती रिपीट कर जीवो देन चेक करिवो जे एटार समटा डिविजिबल बाय 7 होची कि नै 8 -18 -21 -6 10 3 12 3 -2 -27 -8 ओके 8 कटला माइनस 10 49 right so this will be divisible by 7 okay करो 40 ରୁ 10 12 गला ये 14 -49 so answer will be it is divisible by 7 okay so this is the divisibility rule of 7 let's move ahead next कौन 8
नाउ एठी आ गोटे रूल इंट्रोड्यूस करिवि मु कोन ना 2 टू द पावर n ओके 8 एटा कहूँ 2 टू द पावर 3 होची तो 8 रो रूल होची अगर 8 रो रूल कहतो तापर देन मु टू फॉर्मूला टा कर 8 रो कोन लास्ट 3 डिजिट्स divisible by 8 ओके नाउ एबे देखो 2 रो कोन यूनिट डिजिट इज इवन तो सेटा divisible by 2 हवा दरकार यूनिट डिजिट तो 2 टू द पावर 1 रे 1 डिजिट नोचे हमें इन केस ऑफ 4 जोटा कि हमरो 2 टू द पावर 2 हमें नोचे 2 डिजिट्स 2 टू द पावर 3 जोटा हमरो 8 सेथरे हमें नोचे 3 डिजिट्स तो ए जिंसटा कोन होची now we have a rule ki 2 to the power n रहिले we must check the last n digits if they are divisible by the 2 to the power n तो 8 जगह जदी 16 थांदा सेटा होची 2 to the power 4 तो लास्ट 4 digits चेक करिया 2 to the power 5 हेले लास्ट 5 digits चेक करिया तो एमती एटा अप्लाई हो ओके देन आसले divisibility rule of 9 को ठीक अछि 9 रे कोन होची हमरो very simple again just like 3 sum of all digits divisible by 9 10 unit digit equals to 0 11 कोन हबो sum of all even place digits minus sum of all odd place digits equals to 0 or 11x 11x माने it is divisible by 11 and or it will be 0 okay 11 गला 12 रो कोन हबो 3 and 4 composite okay co-prime right so 3 and 4 रो rule satisfy कले जो 13 रो कोन हबो 13 रो गोटे जोटा important रहबो कोन ना एठी भी just like 7 will get a series 1 4 3 minus 1 minus 4 minus 3 okay then जदि 6 टा डिजिट रो अधिक रहला it will again start repeating itself तो 13 रो एमति रहबो then हमरा असला 14 2 into 7 करला 15 3 into 5 right 16 एटा होजी 2 to the power 4 so से रूल अप्लाई होबो ओके देन 17 17 केस रे कोन होबो हमरो ना 17 रे हमरो किछि रूल नाही ओके तो हमकु 16 जाय मन रखियार अछि तापर जहा सब आसीबो सेगुरा करा हमकु नीचे चेक करिया को पड़ियो ओके so that all the divisibility ओके तो एटा सहित हमरो जो बेसिक कांसेप्ट सेक्शन टा रहला ऑफ नंबर सिस्टम वी आर डन विथ दिस तो एबे हमें जिबा हमरो मेन सेक्शन को जोडा होची हमरो एमसीक्यू डिस्कशन राइट तो पॉइंटर फर्स्ट एमसीक्यू तमन पय आसीबो आउ आज हमरो काली क्लास रे यूट्यूब क्लास रे पायल कहले बहुत वीक बोली सीसेट रे आज को आसनांती प्रेजेंट पकेबार अछि तमन को जो माने अच्छा ठीक प्रेजेंट पके दियो okay so let's start with the first question of quant okay very simple question which of the following numbers is divisible by 9 5724 6835 9472 8156 answer कौन हबो को I am giving you 30 seconds 30 भी कोन एटा 15 seconds रहबा कथा still I'll give you 20 seconds okay answer करिए को
So Pranati is saying A. देखिवा तो 7 5 12 2 14 7 5 12 2 4 18 this is divisible by 9 so आसीगला हमर आंसर आ किछि चेक भी करिया दरकार स्टिल देखि दबा 6 3 9 9 गला 8 4 12 13 या हबनी 9 9 4 हबनी 9 11 हबनी so answer is A. Okay, well done. Then next answer. Okay, two consecutive natural numbers are always co-prime, prime, odd, even. कौन हो एवरीथिंग ओके मझे टिके मत दिखेला एथरे डिस्कनेक्टेड बोली माय नाउ ऑडिबल एंड विजिबल गुड मॉर्निंग पायल एते जल्दी क्लास को आसी गलो सैटरडे बोली कोन छुट्टी नहीं जाइछो ओके तो ओके ओके चलो विल कंटिन्यू ए गायत्री A. Okay, very good. Answer is A. Two consecutive numbers will always be co-prime. Okay. 3 4 5 6 7 8 11 12 100 101 111 112 let's say 911 912 all of these will always be co-prime numbers. Okay. एमानंगर कॉमन फैक्टर 1 ही रहइबो आ किछि हबन. ओके ओ मैराथन okay, no problem. Chalo, so answer is A. Then the sum of three prime numbers is 100 if one of them exceeds another by 36 then one of the number is what? So question टा भल कि पढ़ आंसर करिया को चेष्टा कर एटा पई मु तमको दोची 30 seconds आंसर करी उहो it's okay you don't have to say sorry बस तमे काली कहतलो ना तमरो CSAT बहुत वीक बोली so that is why I was asking. वो वाला आंसर Pranati saying A. Okay. Anyone else? It's okay. It's okay. हमें काम करिवा. You will become strong. हमारा confidence भी बढ़ियो. Don't worry. चलो. Numbers are 2, 31, 60. So, as Pranati has said, yes, the answer is option A. केमिति हैला? Now see, 100 कौन? एटा उठे even number, right? Sum of three prime numbers.
मन पका ओके ता छड़ा आ गोटे कोन जिंस ना आमे पिला बेलू पढ़ी आसे odd plus odd will give odd right odd plus even दबो sorry odd plus odd will give even odd plus even will give odd even plus even will give even right now तो एटा कोन गोटे even number तो एटा either this case हबो or this तो तीनटा नंबर सम रहउची तो हमें कोन करिया को पड़ियो तो एठी even पाया को हेले ए दिटा का और जो इवन हला ता से तो गोटे इवन नंबर ऐड करले हमको इवन मिलियो एठी दिटा का इवन अछि आ गोटे थर्ड इवन ऐड करले हमको इवन नंबर मिलियो बट प्राइम नंबर रे हम कोन जानचे ना गोटी ही इवन प्राइम नंबर अछि जोटा कि 2 राइट तो दुईटा इवन नंबर रे पळेबो आ हमको दीटा ऑड नंबर खोजिया को पड़ियो ओके तो को होबो ना 2 plus x plus y equals to 100 तो हमको कोन देछि गोटे नंबर आ गोटे नंबर को एक्सीड करछि बाय 36 so let's say x equals to 36 plus y तो हमें कोन करिया 2 plus 36 plus y equals to 100 तो कोन हला y equals to 100 minus 30 y equals to 31 so x equals to 31 plus 36 तब 67 तो तीनटा का नंबर हमको मिल गला तो हमारा ऑप्शन में कौन सी 67 सो आंसर विल बी 67 ओके नाउ लेट्स मूव अहेड नेक्स्ट क्वेश्चन a leading shoe producing company produces abc number of shoes per hour abc is a 3-digit positive number in how many hours it will produce abc shoes तो नंबर टा होची abc what will be the answer here this if you know you will be able to do this in 10 seconds so मु बहुत ही कम समय देबी करो आंसर को very good Gayatri the answer was a good morning Somit welcome to the class backbenchers latecomers okay so एटर आंसर को okay well done so Pranati is saying C so yes the answer is C एटा आसुजी जो तुमको जणा अछि जदी संगे संगे आंसर कर दबो no Somit it is not abc it will be option C okay that is 1001 देखो abc into 1001 okay कौन होबो C B A के मल्टीप्लाई हला 0 0 0 0 0 0 then 1 रे आसले C B A तो कौन होबो C B A C आसीगला ना नहीं हमारा ओके तो ए जिंसटा कौन रहइबो ना सिमिलर वे रे हमें जदी 101 रे मल्टीप्लाई करछे ए बी विल गेट ए बी तापर एबे देखिले 1001 रे मल्टीप्लाई करछे ए बी सी हमें पाइबा ए बी सी देन 10001 रे जदी हमें मल्टीप्लाई करछे ए बी सी डी विल गेट ए बी सी डी ओके सिमिलरली जत्ते बड़े बड़े जीवो सेते बड़े जीवो ठीक अछि तो एटा होची ए क्वेश्चन रो पर्पस थिला जे ए जिंसटा हमनहु सिखिया अछि एटा होची गोटे ट्रिक राइट तो एई भलिया क्वेश्चन गुराक तमे जत्ते प्रैक्टिस करिवो सेते तमे जानि परिवो ओके तो क्वेश्चन प्रैक्टिस न करे तमनकु ए ट्रिक गुराक जणा पड़िवो ट्रिक न जणा पड़ले तमने एग्जाम हॉल ले जाएंगे देखिवो ए क्वेश्चन दा जोटा कि लाइक आई सेड 10 सेकेंड्स भी लागिवनी आंसर करियो क्वेश्चन पढ़लो आंसर कलो
जदि तमे ए रूलटा जानि थांतो तमे क्वेश्चन पढिलो एबीसी देछि एबीसी बाहर छि हमो कोन हमरा ए क्वेश्चन टा जदि गोट नंबर फॉर्मेट रे देथा लेट्स से 1 2 3 देछि पर आवर प्रोडक्शन एति रहउछि केते घंटा रहबो x आवर लिखलो तमे इक्वल्स टू 1 2 3 1 2 3 नंबर हिसाब रे जदि देथांदा राइट तो तमे कोन करथांदा x बाहर करछो तो 1 2 3 1 2 3 डिवाइडेड बाय 1 2 3 याकू बसी की डिवाइड करी जीवो कले भी केते बाहरियो 1001 सरला एतक जिंस करिया जगह रे तमे देखथांदा आंसर मारथांतो सइला राइट तो सेति पई पिला भाबंती जे डिफिकल्ट हे जाउची कैलकुलेशन हेवी हे जाउची जोटी की तमाने ट्रिक ता ठीक से जाननांती बिकॉज ऑफ लैक ऑफ प्रैक्टिस ठीक अछि हां नेक्स्ट क्वेश्चन बुझबा all odd prime numbers up to 110 are multiplied together what is the unit digit in this product एटार आंसर कुह एटा भी गोटे बढ़िया क्वेश्चन फाइव स्कॉर्पियन डेथ ड्रॉप बाबारे 5 Somit 5 Payal 5 also saying 5 okay very good the answer is 5 well done तो कौन रोचे हमरो 2 3 5 then 7 11 13 and so on हमें जीवा तो 2 हमें देखथिले कोन ओनली इवन प्राइम नंबर राइट एंड 5 रे डिविजिबल प्राइम नंबर ओनली 5 अछि कारण जदि हमें 10 देखिबा सेटा कंपोजिट 15 देखिबा सेटा कंपोजिट 20 देखिबा सेटा कंपोजिट so all these numbers are composite numbers तो 5 गोटिए रहिबो 5 in the entire series तो 5 को हमें जदि मल्टीप्लाई करिबा with any number either जदि even रे मल्टीप्लाई करिबा will get 0 unit place digit और जदि हमें odd रे मल्टीप्लाई करिया हमें 5 पाइबा क्वेश्चन रे हमकु देछि कोन ना all odd prime numbers तो हमें कोन कले इवन टा को काटि देले 5 जदि सब odd रे मल्टीप्लाई हबो तार यूनिट प्लेस रे 5 आसी so that is the answer okay let's move ahead next question होची पोर्ट एंड स्ट्रीम क्वेश्चन एटारे बहुत जण फसी जानती माने एते सिंपल जिंस किंतु स्टिल बहुत जण को आसेनी ओके यार कोन रहइबो बेसिक किछटा रहइबो एक्चुअली एटा को ओके लेट्स डू तमको कोन कोन जानियार अछि of board of stream से एटा जदि ए रहिला एटा ए काहे board e ओके तो एबे कहां हबो resultant velocity in case of boat going upstream माने against the current okay पानी टा एमती बोउची मु एमती जिबाउ चेष्टा करची तो water will oppose the boat सेठी कहां हबो speed of boat minus speed of stream जदि डाउनस्ट्रीम जाउची दीटा को ऐड हे जो स्ट्रीम कोन करिवो सपोर्ट करिवो बोट को जिबारे ओके एति की जिंस आउ कुछ नहीं आउ स्पीड स्पीड रो तो फार्मूला तुमको बेसिक फार्मूला तो
आई होप एति तो जଣା थिवो तुमको पिला बेलू शिखिथिवो कोन स्पीड और वेलोसिटी इक्वल्स टू डिस्टेंस बाय टाइम एति तो आसुथुबो आई होप तो एति जदी जଣା अछि तमरो बोर्ड स्ट्रीम प्रॉब्लम गुराक सबरा आंसर हे जिवो ओके सेटार टेंशन नबाकू पड़िबो हां फर्स्ट क्वेश्चन देखो क्वेश्चन कोन देछि तार आंसर करिया चेष्टा करो स्लैश टी अच्छा डिस्टेंस बाय टाइम ओके तो क्वेश्चन होची हमर कोन बोट्स स्पीड इन स्टिल वाटर इज 10 किलोमीटर पर आवर द स्ट्रीम स्पीड इज 2 किलोमीटर पर आवर व्हाट इज द डाउनस्ट्रीम स्पीड स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन बहुत ही इजी एटा आंसर करिया चेष्टा करो क्वेश्चन तो संग संग देई देली ए लेवल रे ही क्वेश्चन आसीबो जदी आसीबो ओपीएससी रे इजी टू मॉडरेट ही रहबो या डिफिकल्ट क्वेश्चन किछि आसेनी ओके 12 किलोमीटर पर आवर ओके डाउनस्ट्रीम स्पीड होची बोट रा स्पीड प्लस स्ट्रीम रा स्पीड सरीगला वेरी इजी राइट माने एटा होची लॉलीपॉप वाला क्वेश्चन देन boat travels 36 kilometer downstream in 3 hours if the speed of the stream is 3 kilometer per hour what is the speed of the boat in still water एटा टिके ट्रिकी रहबो करिया को चेष्टा करो जदि तमरो बेसिक कांसेप्ट क्लियर नै देन यू विल गेट कंफ्यूज्ड हियर अगेन दिस इजी माने कोन कहबा जदि इजी आ मॉडरेट भितरे गोटे लेवल अछि एटा सेही लेवल रे आसीबो ओके so try to answer currently 9 kilometer per hour okay let's see boat travels 36 kilometers in 3 hours so resultant speed is 36 by 3 so answer about 12 kilometer per hour not answer the speed of the boat then stream ro speed kete vs equals to 3 kmph and amok dechi boat is going downstream here right eta hochi amaro downstream speed so downstream case re kama v equals to vs plus vb so speed of boat equals to v minus vs 12 minus 3 9 kmph so as easy as that okay then next question a boat travels 24 kilometer upstream in 2 hours and 24 kilometer downstream in 2 hours what is the speed of the stream एटा कुह एटा जो माने कोच जे वीक बोली से माने कुह ओके ओके एनीवन एटा होची मॉडरेट लेवल क्वेश्चन डिफिकल्ट भी नो कौन होनी का द्वारा हो चलो अपस्ट्रीम स्पीड केते रहला 24 by 4 केते हो 6 kmph अपस्ट्रीम स्पीड टा कोन
VB minus VS डाउनस्ट्रीम स्पीड टा केते रहला 24 किलोमीटर इन दी आवर्स तो 12 kmph तो एटा होची VB प्लस VS तो एठी हमको मिल गला दीटा इक्वेशन ये दीटा के इक्वेशन को सॉल्व करले दीटा के इक्वेशन ऐड कर देले VS VS कट गेला 2VB इक्वल्स टू 18 VB इक्वल्स टू 9 kmph मो कौन पचारची स्पीड ऑफ द स्ट्रीम तो VB माइनस VS इक्वल्स टू 6 9 माइनस VS इक्वल्स टू 6 VS इक्वल्स टू 3 हेगला आंसर yes neighbor okay no one before ND hello neighbor welcome to my class so हमारा आंसर कौन होगा 3 kmph option B okay well done Payal and Paranati very good अब पायल तमे कौन कहू तमारो वीक बोली बढ़िया से तो आंसर करछो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन a boat can travel 15 kmph in still water if the stream flows at 5 kmph for how much time it will take to travel 40 km upstream it भी बहुत ही easy question right try to answer जल्दी से अरे मैथ्स को डर कौन बढ़िया बढ़िया मैथ्स तो आंसर करछो आउ डरुचो कौन okay so Pranati is saying C okay so EB equals to 15 kmph ES equals to 5 kmph अपस्ट्रीम पचारची तो ई अपस्ट्रीम स्पीड केते हबो EB minus BS equals to 10 kmph डिस्टेंस देची 40 km हमारा स्पीड मिल गला इतनी 10 kmph तो हमें देखते कोन वेलोसिटी इक्वल्स टू डिस्टेंस बाय टाइम हमको कौन दरकार टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस बाय वेलोसिटी तो डिस्टेंस होची 40 बाय 10 इक्वल्स टू 4 आवर तो ऑप्शन सी ओके as easy as that okay then let's move a boat travels 30 km downstream in 2 hours 30 km in 2 hours is downstream speed returns upstream in 3 hours 30 km in 3 hours upstream so E down is how much 15 E up is 10 तो एटा कौन डाउनस्ट्रीम होची EB plus BS या होची B minus BS एमती गोटे क्वेश्चन करथिले हमें व्हाट इज द स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर हमको VB काढियार अछि BS BS कटि गला EB equals to 2VB equals to 25 B equals to okay 12.5 km per hour हबो तो एठी ऑप्शन रे 12.5 जगह रे 12 दिया छी सो ऑप्शन बी टा आंसर नि जाओ ओके ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा मोस्ट लाइकली नेक्स्ट रे हमरा यस रीजनिंग so we are now entering the reasoning section so math section रे quantitative aptitude section रे all clear
Okay, so let's go to the first question of reasoning. Reasoning रे दीटा section रू question अछि आजी blood relation and ये हमरो direction and distance. Okay, so ये दीटा section रू पांचटा पांचटा 10टा question अछि. Now question होची, pointing to a woman, Ramesh said, she is the daughter of my grandfather's only son. How is the woman related to Ramesh? Okay, everyone see, sir, क्या? So my grandfather's only son. मो जेजेबापांकर ओनली सन किए मो बापा, मो बापांकर झियो, मोर कौन हबो भौणी. So answer is sister, as easy as that. Then P is brother of Q, R is father of P, S is sister of R. How is S related to Q? Go. Now, इमितिया क्वेश्चन रो आंसर जेतबेले करिवो तबेले तमु गोटे जिंस माने दीटा जिंस तमु फॉलो करिया कोन ना गोटे रहिला फादर मदर वाला जनरेशन. ओके, आ गोटे ला ग्रैंडफादर ग्रैंडमदर वाला जनरेशन, आ गोटे ला चाइल्ड जनरेशन, राइट. तो एमती ईच जनरेशन रो गोटे लेयर रे लिखिबो. ओके, तो तमु कहछि पी क्यू आर ब्रदर एंड सिस्टर, तो एमती लिखिबो. ओके, देन ता सहित नेवर अज्यूम द जेंडर ऑफ समवन व्हिच इज नॉट गिवन. कुहाइनी जदि तमे जेंडर अज्यूम करिवनी. एंड जेंडर टाकू केमती लिखिबो, गोटे काम करिवो एमती दीटा शेप नै जो, गोटे स्क्वायर गोटे सर्कल. स्क्वायर टाकू लेट्स से मेल, सर्कल टा फीमेल. ओके, हां सेटा को मुंडर रखिए हमें एबे क्वेश्चन कर. P is the brother of Q. P is the brother, so पुओ मेल is the brother of Q. Q रो किसी दिया ही. ओके, एटा हला फर्स्ट स्टेटमेंट. R is the father of P. R is the father of P. R होची मेल, तो एठी लिख दबो फादर सन रिलेशन, एठी लिख दबो सिबलिंग रिलेशन. ओके, देन S is the sister of R. R रो सिबलिंग. ओके, होची S, एंड S होची कोन सिस्टर ऑफ R. तो R रो सिस्टर S, she is a female. How is S related to Q? P and Q रो S को हबो आंट हबो. So option B. Even if we don't know the gender of Q, we still got the answer. But जदि पचार थांदा QS रो कोन हबो, QR रो कोन हबो, सेठी तमे कोन करथांतो cannot be determined. Okay, a man said, the woman I saw is the daughter of the only son of my mother. कोन हबो, एटा बहुत ही इजी टा. Daughter.
Okay, see, the woman I saw is the daughter of the only son of my mother. Mo maankar gotiye boli puo mu, and moro jia, obviously jia, right, daughter. Then if X is the brother of Y, Y is the sister of Z, and Z is the sister of is the father of W, how is X related to W? So similar way रे करिवा एटा हमें, right? कौन करिया? First होची X is the brother of Y. So X होची male, Y सहित sibling, Y रा gender हमको जाना नहीं, right? Y is the sister of Z, Y रा gender अभी जाना पड़ेगा female, तो ये भी sibling Z. So W is the father of Z. So sibling देखो, जदि एठी तमे भाबियो जे अरे अंकल भी पारे, ये पारे, सी पारे, तो X W कौन हो? Uncle. So answer is uncle. Then next question. Pointing to a man, a woman said, his mother is the only daughter of my mother. How is the man related to the woman? Okay. So pointing to a man, a woman said, a man ro mother is the only daughter of my mother. Okay. So only daughter ही हबो, ए mother ही हबो, so man ro mother, so man is the son of the woman, so answer is A. Okay, then next asle hame direction and distance question. Okay, now Rabi walks 10 meters north. एटा रे कोन करियो, तुमको बेसी किछि करियार नै, तमे कोन करियो, north, south, east, west, तुमको एति की जानियार अछि. ओके, ता सहित कोन करियो, तमे स्टार्ट करियो, हां रिलेटिवली ट्राई करियो रियलिस्टिक रखिया को डिस्टेंस पर कोन ना. रवि स्टार्ट कला गोटे पॉइंट कुआडे जीव, नॉर्थ को जीव लिखि, नॉर्थ को गला 10 मीटर्स, देन कहला ही टर्न्स राइट. तो जदि नॉर्थ को एमिति जाउची, राइट को टर्न कले ही विल गो टुवर्ड्स ईस्ट, राइट. so towards east he will go 5 meters, 5 meters, then turns right again. तो east को जाउची, right को बुलले south को जीव, right. so he will move south 10 meters. how far is he from the starting point? तो ए पॉइंट टा केते हबो, 5 मीटर ना नहीं, तो आंसर इज बी. को डायरेक्शन रे अछि, टुवर्ड्स द ईस्ट अछि. ओके, a person walks 15 meter to the east, so 10 meter to south, then 15 meter to west. how far is he from the starting point? So 15 meters to the east, then south 10 meters, then 15 meter to the west. So he is 10 meters away from the starting point. Okay, very simple. Then next question. Rahul walks 20 meters north, then turns right and walks 15 meters, then turns right again and walks 20 meters. In which direction is he from the starting point?
Okay, Prastuti east. Rahul walks 20 meters to the north, 15 to the turns right and 15, then turns right again, then walks 20. So starting ru east re achi. So option C. A man walks 10 meter to the south, then 10 to east, 10 to north, then 5 to west. How far is he from the starting point? 10 मीटर साउथ गला, देन ईस्ट गला 10 मीटर, नॉर्थ गला 10 मीटर, वेस्ट गला 5 मीटर. So distance is 5. Very simple छुआ question भाई. Okay. Now I think these questions are very easy for you people. तो आमे कौन करिया नेक्स्ट क्लास रु टिके डिफिकल्टी बढ़े दवा. ओके मजा आसु न थाई पारे आई थिंक. तो नेक्स्ट क्लास रे डिफिकल्टी मु टिके बढ़े देबी. ओके now next question. Person walks 8 meter north, then 6 meter east, 8 meter south, 3 meter west. How far and in which direction is he from the starting point? 8 है north को जीवो, 6 east को जीवो, 8 है south को जीवो, 3 west को जीवो. So 3 meters to the east. So answer is A. Okay. I think with this we are done with here. We are done with reasoning section. Then reading comprehension ର question. This हमरो माने डिस्कशन करिवारे यादरे बेसी किछि नाही. हमको बस पढ़ी के आंसर करियार अछि. एटार देखा जाउछि कि नहीं. Yes, it is visible to all of you. Hopefully clearly. So पढ़िबो पैसेज टा पूरा. Okay. Then you have to answer. Okay. एटा होछि लास्ट ईयर रो गोटे पैसेज 2024 prelims. Okay. तार एटा होछि गोटे क्वेश्चन. एटा पीडीएफ दिया गला परे try to answer yourself. Reading comprehension देखो तादरे बेसी किछि पढ़ेया को नाही. ओके तुमको बस प्रैक्टिस 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 करके तुमको सेटा करियार अछि. तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन रो to do the practice and comment रे each question रो answer टा mention कर देथिबो after we are done with this. The first question, what is said about Pathan and Tamil in the passage? Okay, Pathan और Tamil मानक विषय रे गोटे passage अछि. This is basically about diversity of India. It is tremendous, it is obvious, it lies in the surface and anybody can see it. Concerns itself with physical appearances as well as certain mental habits and traits. There is little in common to outward seeming between the Pathan of northwest and the Tamil in the far south. So there is little in common between the Pathan and the Tamils. They have little in common outwardly. So answer of our option A. Okay. Then next question. Why is it not surprising that India has influenced the Pathan? So passage एमती आगु पढ़ी पढ़ी जो passage रे ही हमको direct answer मिल जो. Then between the Pathan, their racial stocks are not the same, though there may be common strands running through them. They differ in face and figure, food and clothing, and of course language. In the northwestern frontier province, there is already a breath of central air, and many a custom there are as in Kashmir remains one of the countries on the other side of the Himalayas. Pathan popular dances are singularly like Russian Cossack dances, yet with all these differences, there is no mistaking the impress of India on the Pathan as this is obvious on the Tamil. This is not surprising, for these borderlands and indeed Afghanistan also were united with India for thousands of years. The old Turkish, so our answer मिलगला ठीक. कौन ऑप्शन ए because the region was
historically united with India? ଏଠି ଦେଖ yeah, launches cell broadcasts teaching indigenous technology for instant disaster alert. Okay, this is the first time I am getting such alerts. Okay, okay. So, uh, this is the answer here. This is not surprising, for these borders were united with India for thousands of years. So, एमती ही straightforward answer सब question रहइबो. Okay. So, first question गला, second गला, third अच्छी सेंधी तारे भी straightforward answer रहइबो, fourth and fifth. Total 5टा question गला. ଆମର reading comprehension ର. Okay. So, with this we will end today's class. Hopefully you all learned something. Questions were rather easy. ସେତେ ମାନେ obviously this was the lower level questions of OPSC CSE. Okay, prelims exam ro CSAT paper ro. Next class onwards we will go into two different topics of reasoning, two different topics of quant, and one more reading comprehension in the next week. Okay. तापरे next week रे आउटे geography रो भी class अछि, so be prepared for that. सेठी 25 MCQ रहबो and those will be uh, very good. I will keep easy, difficult and moderate all type of questions there. Okay. So with this, let's end today's class. Thank you very much. We'll see you in the next week. Okay. Have a great day.